Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. Today I am going to discuss another very important topic, that is 2 to 5 kingdom classification system. Clear? So let's move to the classboard. So dear students, 2 to 5 kingdom classification So dear students, very simple topic और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपके लिए इसमें मतलब कि बहुत कम ऐसा होगा कि कोई नई बात आपको सुनने में मिलेगी। अदरवाइज़ ये वाला जो टॉपिक है बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर, जो इससे पहले हमने पढ़ा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमने पढ़ी, क्लासिफिकेशन के हवाले से जो भी हमने बातें की उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा हुआ है। लेकिन एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द चैप्टर एंड एज़ पर द सिलेबस हमें इसको पढ़ना है और इसको समझना है कि बात दोबारा आई है तो उसमें हमें कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है। सो 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस टॉपिक इज द वेरियस classification systems classify organisms into 2 to 6 kingdoms. मुख्तलिफ तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं और उनमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 किंगडम्स बनाए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। आप भी सुन के हैरान हो रहे होंगे, ये आपके लिए नई बात है कि ये आपने तो 5 किंगडम्स पढ़े थे, तो एक्चुअली हम मूव 5 पे ही करेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे इनिशियली लोगों ने, जब बायोलॉजिस्ट ने उन्होंने इस पर क्लासीफाई किया, जहाँ तक 6 किंगडम की बात है, आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता ही देता हूँ कि वो 6 किंगडम क्या थे। Eubacteria, Archaebacteria or Archaeobacteria, then the protists, then the fungi, then the plantae and Animalia. Clear? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that was the 6 kingdom classification. Lekin that was traditional, and that was not the modern. So initially, आपको पता है कि पहले 2 kingdoms बनाए गए थे, 2 kingdoms. First of all, there were 2 kingdoms. Classification. So according to this 2 kingdom classification system, बहुत पुराने, इनिशियली बहुत पुरानी बात है, तो 2 किंगडम्स बनाए गए थे और वो 2 किंगडम क्या थे? That was based on the mode of nutrition. Here, on the basis of mode of nutrition. So according to this, there were 2 kingdoms. Number 1, kingdom Plantae, and number 2, there was kingdom Animalia.
Clear? So in kingdom Plantae, the organisms were placed. The organisms which can prepare food from simple inorganic compounds were called autotrophs. Called autotrophs. क्लियर? और जितने भी ऑटोट्रॉफ्स थे उसको किंगडम प्लांटे में प्लेस किया गया और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया था डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो, इसमें द प्लांट्स प्लस algae plus the euglena and bacteria and fungi. These organisms were usually placed in the kingdom Plantae due to their certain similarities, while in the kingdom Animalia, the organisms which cannot prepare their food by themselves, rather they are dependent on autotrophs or do so by decomposition, या फिर खुराक हासिल करते हैं decomposition के जरिए. Clear? They were called as heterotrophs. और इसमें जो organisms जो शामिल किए गए थे, they were animals, all animals and protozoans. Clear? तो पहले तो ये किंगडम क्लासिफिकेशन रहा, लेकिन यहाँ पर एक आया मसला. There was an objection. So objection ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन की थी. Objection आई regarding the euglena. यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया इसकी वजह से, इस ऑर्गेनिज्म की वजह से. ऑब्जेक्शन ये थी that the euglena possess plant-like, having chlorophyll and animal-like, lack of cell wall characteristics. यानी किंगडम तो बनाए दो, तो इसमें यूग्लिना में एनिमल लाइक भी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं और प्लांट लाइक भी मौजूद हैं. एनिमल लाइक क्या है कि इसमें दे लैक सेल वॉल. प्लांट लाइक क्या है कि दे हैव द क्लोरोफिल, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. तो फिर इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ. सो in 1866 there was a scientist by the name of Ernst, or someone says Ernest, so I say Ernst Haeckel, proposed the third kingdom, that was kingdom Protista. Kingdom Protista. So that was the third kingdom. So initially there was only kingdom Plantae, then there was and kingdom Animalia. Now there was third kingdom, kingdom Protista, in which
the unicellular organisms like Euglena and bacteria were included. इसमें इंक्लूड कर लिया गया इनको, क्लियर? यानी कि अब किंगडम प्लांटे में से यूग्लिना को भी रिमूव कर लिया गया और साथ में बैक्टीरिया को भी रिमूव कर लिया गया, बाकी उसमें बढ़ के प्लांट्स, एल्गी एंड फंजाई। लेकिन in 1937 there was a scientist by the name of E. Catton for the very first time introduced the term prokaryotic that means pro means before and karyo means nucleus. So the organisms which lack nucleus for bacteria and blue-green algae. So basically ये blue-green algae they were cyanobacteria. बाद में पता चला ये algae नहीं है बल्कि cyanobacteria. तो इन organisms के लिए उसने एक term introduce कराई prokaryotic and the term eukaryotic. Clear? So eu means true. Eu means true and karyo means nucleus. The organisms having true nucleus for plants and animals. Clear? तो ये उसने टर्म इंट्रोड्यूस करवाती 1937 के अंदर. At the same time, so another objection was there. Now, what was the objection to the three kingdom classification? That the fungi do not fit under the category of, इससे पहले कहां पर मौजूद है? In plants, of plantae, because प्लांट्स में उसको इसलिए शामिल किया गया कि इसके पास सेल वॉल है, और फिर पता ये चला कि इसके अंदर कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स. वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट लाइक कैरेक्टर्स. प्लांट लाइक कैरेक्टर्स उसमें शामिल था that the fungi possess cell wall. बाद में पता चला कि इसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर भी है. एनिमल लाइक कैरेक्टर. एनिमल लाइक कैरेक्टर ये निकला कि it is a heterotroph. It is a heterotroph. Okay? तो ये हेटेरोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, तो इस कैटेगरी से तो उसको निकालना पड़ेगा. तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इसके लिए, ठीक है. और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो इनसे डिफर भी कर रहे थे.
ये तो सिमिलरिटीज थी, ये लाइक करेक्टर्स थे। सो डिसिमिलरिटीज भी थी इनकी, वो भी मैं आपसे जिक्र कर देता हूँ। डिसिमिलरिटीज विद प्लांट। अब डिसिमिलरिटी ये थी कि सेल वॉल तो है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन नॉट सेलुलोज। प्लांट्स की जो सेल वॉल वो बनती है सेलुलोज से, इसकी सेलुलोज से नहीं बल्कि काइटिन से बनी हुई है, तो डिफरेंस आ गया। एनिमल से क्या उसकी जो है वो डिसिमिलरिटी आ गई, वो प्रॉब्लम आ गया। वो ये था कि हेटेरोट्रॉफ तो हैं बट आर absorptive heterotroph, not ingestive। जो प्लांट्स जो एनिमल्स हैं वो इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, जबकि ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ थी, कुछ डिससिमिलरिटीज़ थी, और यहाँ पर फिर को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। मतलब कि अब इसको कैसे उस वहाँ पर रखें, ये सिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज़ हैं। फिर कुछ पता चला कुछ के अंदर ऐसे भी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी इन दोनों में नहीं है। ठीक है, वो हम चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ेंगे इन द किंगडम फंजाई, कि दे हैव गॉट न्यूक्लियर माइटोसिस। एक जस्ट वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे चलकर चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा करेक्टर भी इसके अंदर मौजूद है कि ये बिल्कुल भी इन दोनों के अंदर मौजूद नहीं है, ना प्लांट्स में ना एनिमल्स में। दैट इज न्यूक्लियर माइटोसिस। और वो न्यूक्लियर माइटोसिस क्या था कि दैट वाज द ओनली यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द फंजाई, कि द न्यूक्लियस divides into two, यानी कैरियोकाइनेसिस होती है without breaking the nuclear membrane, without breaking the nuclear membrane। आमतौर पर आपने देखा हुआ है कि जब कैरियोकाइनेसिस होती है, जब उसकी प्रोफेज आती है, तो प्रोफेज के अंदर जब वो क्रोमैटिन कंडेंस करता है और वो माइटोटिक अपरेटस बनता है, क्रोमोसोम्स आती हैं, उनकी अटैचमेंट होती है उनके साथ स्पिंडल फाइबर्स के साथ, तो उस वक्त जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, यानी कि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं। यहाँ पर वो नहीं हो रही, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन कॉन्टैक्ट है, अंदर ही अंदर सारा कुछ हो रहा है, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे हैं और इक्वल डिवीजन हो रही है। सो इसकी बिहाफ के ऊपर फिर in 1969, there was a scientist by the name of Robert Whittaker. In 1969, he proposed 5 kingdoms. क्योंकि एक तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की टर्म क्लियर हो चुकी थी, दूसरे नंबर पर फंजाई का इशू भी निकल चुका था, इससे पहले 3 किंगडम बन चुके थे। सो ही प्रपोज्ड 5 किंगडम्स, और इसने बेसिस क्या रखी? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन with 3 levels, with 3 levels, 3 levels थे उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। उसमें 3 levels ये थे, दैट इज फोटोसिंथेसिस और ingestion and absorption, clear? और जो सेकंड बेसिस था दैट वाज the cellular organization, cellular organization with 3 levels again, with 3 levels। और वो 3 levels क्या थे? नंबर 1
the unicellular organisms. Number 2 are the colonial organisms. And number 3, the multicellular or multicellular organisms. So ये 2 मोड और इनके 3 लेवल्स के बिहाफ के ऊपर उसने 5 किंगडम्स बनाए. And the 5 kingdoms which he created were: number 1, kingdom Monera for prokaryotes. Number 2, kingdom Protista for unicellular algae and like the organisms, the protists, eukaryotes, okay? Unicellular eukaryotes. Number 3, the kingdom Plantae for eukaryotic multicellular plants. Number 4, the kingdom Fungi, the eukaryotic multicellular reducers. तो इनके डिटेल्स इंशाल्लाह आगे चलकर शेयर करूंगा. Don't worry about that. And finally, the kingdom Animalia. Here, the eukaryotic multicellular animals. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन 5 किंगडम्स के. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.